do a quick scan of your body from top of the head to the bottom, just to make sure that there is no stress, no tension, no pain, और कहीं पर भी कुछ पेन या कुछ है. I want you to breathe in and breathe out and release. Let it go. When in the meditation I tell you guys to visualize, I want you to visualize for a couple of minutes, but after that I want you to leave it to your higher self or your consciousness, so that and you will focus back to your breath, and then your consciousness is gonna bring you the message. Okay, but make sure no doubts. So on the top of the head, your forehead, your eyebrows, and also one thing, अगर आप रिलैक्स नहीं होंगे तो आपको मैसेज नहीं मिलेगा. मैसेज मिलेगा लेकिन you may not able to catch it. Okay, so it is very important that your body should be relaxed. Eyes, your nose, your facial muscles, relax. Your teeth, back of your head, relax. Your neck, relax. Next, your spine, your waist, your thighs, relax. From the front of the body, the upper front body, your chest, time you find any strength or anything, make sure you take a breath in and breath out. And when you breath out, release the pain, stress, anything as leaving your body. Okay? Upper arms, your lower arms, your hands, your nails, fingers, relax. Calf muscle, shin area, feet, toes, toenail, all relax. Now take a deep breath, like you're filling up this beautiful body with the oxygen, and then imagine that it is going to heal each and every part of your body, connecting to the cosmos. Okay? And then release. So you are inhaling the positivity, the relief, and you are exhaling any stress, any pain, any doubt, any fear.
Yeah. Let's invite the consciousness of the Mahavatar Babaji. And if you want to invite, आपके कोई गुरु हैं, इष्ट देव हैं, आप उनको invite कर सकते हैं. And today, because it's a Mahashivratri, we're gonna invite the consciousness of the Lord Shiva also. भगवान शिव की consciousness को भी हम invite करते हैं. Keep observing your breath. Breath in, breath out. Now we're gonna follow the first step. Just we have to clear our aura from any type of uninvited influences. Uninvited influences क्या होते हैं? Influences वो होते हैं जो सडनली आपका मूड बदल जाता है, या आपको गुस्सा आ जाता है, या आपका झगड़ा हो जाता है घर में किसी से. इसका मतलब है कि आपके आसपास कोई अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस हैं, या कोई ऐसी एनर्जी आपसे स्टिक कर गई है, तो आपको रिलीज करना बहुत जरूरी है. कोई एनर्जी कोई खराब नहीं होती है. इट्स नॉट गोना हार्म यू, बट द थिंग इज दैट कि आपको पता नहीं चलता, एंड दैट एनर्जी इज स्टिकिंग एंड गिविंग यू दोस इंडिकेशंस ऑफ एंगरनेस, फ्रस्ट्रेशन. So you just trying to release that. So let's clean our aura to all the uninvited influences in my aura. I send love and light. You are each, whole and healed. You are all made in love and light, and you are still love and light. Each feel no pain now, and you are not afraid. Each have perfect place to go. My higher self. आपका हायर सेल्फ का अगर आपको नाम पता है तो मेक श्योर यूज द नेम अप हियर. माय हायर सेल्फ टू टेक यू देयर नाउ. ईच ऑफ यू गो इन पीस. Now after clearing the aura, I'm gonna just say silently or repeat after me. It's up to you. I lock my aura to all except my higher self with the name of your higher self. Now imagine कीजिए कि we are all sitting in a big wide place. There is a huge pyramid on the top of us. आप गोल्डन पिरामिड विजुअलाइज कर लीजिए. अगर आपको कोई और थॉट नहीं आता तो जस्ट विजुअलाइज वी आर सिटिंग इन Patriji in the pyramid, and it's like a big wide open place. And we are sitting in the group consciousness. There is so much power in the group consciousness. अगर हम अकेले मेडिटेशन करते हैं वन टाइम होता, लेकिन अगर आपके साथ दूसरा पर्सन इंक्लूड हो जाता है
तो वही मेडिटेशन आपका 11 टाइम्स हो जाता है। Especially today is a very very powerful day. Energies are really high. वैसे भी अर्थ की एनर्जी बढ़ रही है, अर्थ की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो the more you meditate in a group, or even if you can do just by yourself, it's okay. You are contributing to increasing the energy of the earth. Now breath पे ध्यान देते देते I want you to bring your attention to your heart. अपने हार्ट में फील कीजिए। अगर आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा है तो जस्ट फील द ब्रेथ, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हुइए। फील कीजिए आपके हार्ट में, योर हार्ट इज फुल ऑफ लव। ध्यान से फोकस करके अपने हार्ट के ऊपर फील कीजिए, इट्स फुल ऑफ लव। एंड नाउ यू गोना इनवाइट टू योर हायर सेल्फ टू गाइड यू। सबसे पहले तो आप अपने हायर सेल्फ से सिग्नल मांगिए। Pleasant signal बस, it can be a twitch of eye, anything, कोई sensation, कुछ भी। It is your signal from your higher self. अब विजुअलाइज कीजिए या इमेजिन कीजिए कि you are in a golden light. और ये गोल्डन लाइट कहाँ से आ रही है? जो बिकॉज वी इनवाइटेड द गोल्डन पिरामिड, जो गोल्डन पिरामिड हमने इनवाइट किया है उससे ये गोल्डन एनर्जी हम सबके पास आ रही है। We are all sitting in a pyramid and each individual has golden light. Surrounded by the light. Each individual is surrounded by the golden light. It's a bright golden light. इस गोल्डन लाइट में जैसे जैसे वो गोल्डन लाइट आपके ऊपर गिर रही है, each individual is feeling so good. They are feeling happy. The happiness. सब लोग, जितने भी लोग ग्रुप में बैठे हैं, everybody is feeling so happy. Nobody has any doubts, no problem. Kabhi everyone is observing their vibration. Ask your higher self to give you the message for the universal truth.
while you're asking, you have to keep your focus on your breath. When you're focusing on your breath, you can hear, or sometimes it may be a thought also, जो आपको मैसेज हो सकता है. But do not doubt. Trust and observe. Okay. आपको कोई फोर्स नहीं करना है. You do not force yourself to see कि मुझे कुछ देखना है. आपकी inner knowing भी हो सकती है. It could be a inner knowing also. Okay. So just trust and see around you. You may see some pictures also. Alright, it can be any object or anything. If you are seeing some pictures or if you're getting some objects, just try to go close to that object. Maybe you can touch it. Maybe the picture. You can go and touch the picture. अगर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है. जस्ट कीप ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ एंड कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ, आई एम रेडी, आई एम रेडी. डजंट मैटर कि आपको यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में नहीं पता चला. यू आर स्टिल कनेक्टेड द प्रोसेस. ओके, ऑब्जर्व योर हार्ट. ध्यान से देखिए कि आपके हार्ट के पास क्या क्या थॉट्स आ रही हैं आपके पास. Maybe there is a message over there. जो भी वाइब्रेशन आपके पास आ रही है, just try to observe them by closing your eyes. Do not open your eyes, please. You are connected to the process. कुछ दिखाई दे रहा है जहाँ जाके हम बैठ सकते हैं या देख सकते हैं. Maybe your beautiful altar. वो जगह स्पेशली आपके लिए बनाई गई है. A place for you to sit securely, safely. It is your place to go and sit. You can visualize, you can imagine. It is a technique, so it's both. आप visualize करके उसे देख भी सकते हैं और वहां जाके बैठ भी सकते हैं. और अपने हाथ में आप बोलते रहिए, just go and sit on that beautiful altar. Now in your heart, say, I am ready. I am ready. Connect with my higher self. उस फीलिंग को रखिए कि जैसे आप रेडी हो गए हैं, आप तैयार हैं. You are ready to connect and get the guidance from your higher self कि आप सचमुच में रेडी हैं. Do not doubt. अगर आप डाउट करेंगे तो आप you are creating a block for yourself. आप अपना ऑरा लॉक कर चुके हैं. तो इस गोल्डन पिरामिड में हम सबके अलावा कोई भी नहीं आ सकता. तो ट्रस्ट द प्रोसेस. नो वन कैन एंटर. Now visualize that you are inviting your higher self. And then you see a door.
ask your higher self to enter into this door, in this golden pyramid with love. ट्रस्ट कीजिए कि जो आप बोल रहे हैं, when you are inviting and you are like this pyramid, or your invitation has already been sent to your higher self. बहुत ही प्यार से बोलिए with love in your heart, जो आपके पास infinite है, the invitation, I'm ready to get connected. I'm ready for your guidance, my dear higher self. और अगर अब आपको थोड़ा सा झटका सा लगता है, जैसे हम सोते उठते हैं, अगर कोई आपको ऐसा लगता है, कोई jitters या you feel like something passing through or maybe air, just embrace it because that is your higher self. It's a possibility. Some people still are not trusting. आपके पास जो भी एनर्जी आ रही है या जो जर्क सा भी लगा होता है जब आप बैठे होते हैं, so the one which is coming, the energy is the energy of your higher self. वो जो एनर्जी है, it's asking for your permission to say yes, can I enter, and say yes, you allow, yeah. आपको कोई गॉड और गॉडेस भी दिखाई दे सकते हैं, कोई एंजल भी दिखाई दे सकते हैं, because your higher self can be, it can be any goddess or it can be any, I mean, it's different for everybody. So for me it's the name of the goddess, but you can have a nickname of your childhood, you can have a nickname of your pet. God and goddess 100% हो सकता है, because my dear friends, we are all evolved souls, we are all gods. So you can see a big picture of a god, or you see a god is there, all your higher self, as your higher self, it's a possibility, just trust it. हायर सेल्फ को इनवाइट करने के बाद आप अपने हायर सेल्फ को बहुत प्यार से साथ एंटर करके आप ऑल्टर पे बैठ जाइए और हायर सेल्फ को बोलिए कि वहां पे वो उसी सेफ और सिक्योर प्लेस में आपके सामने बैठे. Just ask your higher self to sit in front of you, masters. Process, the one we are doing, we just trying to make it easier for you to trust the process and inviting your higher self. Higher self हमेशा आपके साथ है, it is always there, वो कभी हमें नहीं छोड़ता है, but you are not able to experience or not able to talk to them because you have a block, you and created by you. ये block आपने ही create किया है. Now आपका जब हायर सेल्फ सामने ही बैठा है, जो भी आप विजुअलाइज करना चाहते हैं, it can any image of your higher self, अब उससे गाइडेंस मांगिए. Ask for the guidance from your higher self. Trust the process, trust your vibration. अगर आप कुछ भी फील कर रहे हैं, it is your capability. You are connected to your higher self. This process, believe, this process is happening. You are connected to your higher self. And ऐसा नहीं है कि आप imagine कर रहे हैं. It is happening. Just let it happen. You have to allow yourself to let it happen. है कि कभी कभी आप बहुत overwhelmed हो. You feel overwhelmed sometimes when you get connected to higher self because you've been waiting for years. पता
पहले कितनी लाइफ्स तक, कितनी लाइफ्स निकल चुकी है ना, उसकी बात आए। तो maybe feel overwhelmed when you get connected to your higher self, because you've been waiting for years and lives to get connected to your higher self. So you may feel overwhelmed, you may feel little stressed, or stress is not the right word. I will say ki, like, you feel yeah, there is something you're not comfortable, but it's okay, embrace it. ओवरवेल्म है लेकिन एम्ब्रेस इट। अब जब आपके सामने आपका हायर सेल्फ बैठा है, आस्क फॉर सिग्नल, ओके? से माय डियर हायर सेल्फ, प्लीज गिव मी माय सिग्नल नाउ सो दैट आई कैन यूज इट। और उसको बताइए कि आपको क्यों ये सिग्नल चाहिए। I will know when you are there for me anytime in future. I need that signal. So please help me understand my signal. My dear higher self, please help me. Please help me. Please help me realize what is my signal. तो अगर अभी आपको अचानक से एक हार्ट की पल्सेशन आती है, या कोई वेव भी आती है हाथ में या पैरों पे, कुछ एकदम गश ऑफ एनर्जी आता है, इट इज योर हायर सेल्फ। दिस इज योर हायर सेल्फ इज कम्युनिकेटिंग विद यू। इट इज द सिग्नल। ऐसा हो सकता है कि ये सिग्नल आपने पहले भी कभी महसूस किया हो, या इट्स ओके, बिकॉज हायर सेल्फ इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट ऑल द टाइम। हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि इट इज ऑलवेज अ प्लेजेंट सिग्नल। You may feel a beautiful, like your heart full of love also. This can be a signal from your higher self too. वो भी आपके higher self का signal हो सकता है. Or you maybe feel so much peace in your heart. This is the signal of your higher self. Now you have to just trust and connect to your higher self anytime. With this love in your heart, feel the love of your higher self getting connected to you. आप अपने higher self से जैसे बात करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. आप में से वो बहुत सारे लोग हमेशा बार बार बोलते हैं कि मुझे मेरे हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं हो रहा. Please guys, all masters, stop it. This is your higher self sitting in front of you. You don't need to worry. If you're not able to visualize, it's okay. You are connected to your higher self. During the day it will happen कि आप जैसे रात को जब अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं तो आपको मैसेजेस मिले. Right now you see your higher self is in front of you. Just ask for a signal so you can use it anytime. And when your higher self is looking into your eyes, अपने आप को बोलिए I am ready and open to receive my signal, my higher self. I'm ready for it. कभी कभी आपको इसलिए भी सिग्नल नहीं आता है because you are not connected. Now you met your higher self today and he or she gave you a signal also. So now you have to remember this is how your higher self may communicate through the messages. तो दिन में भी आ सकते हैं, रात में भी आ सकते हैं, or maybe through some videos, or maybe a conversation at your workplace, or maybe at your home, or through the people. कोई बात कर रहा है उससे भी आपको हायर सेल्फ का
मैसेज आ सकता है, because we are all connected. Just remember, we are all connected at energy level. Always trust whenever you're asking for a signal. Always trust that you are connected, you are guided. बस आपका जो कनेक्ट होने का तरीका है वो डिफरेंट वे है. Feel the connection. You have a different way to know the connection and feel the love. अपने मन में इस ट्रस्ट के साथ कि योर गाइडेंस, with the guidance from your higher self, you're going to evolve spiritually and socially, okay? And now I want you to meditate with your higher self before you ask for the universal truth, okay? So let's continue with the high vibration of yourself for a few minutes. Keep focusing on your heart, enjoying the moment. जिन लोगों को यूनिवर्सल कनेक्शन फील हो चुका, they can ask for the message for the universal truth. You can go ahead and ask the message, but I will stay with the rest of the group just to make sure that we are all connected to our higher self. All my masters, even if you are not able to experience anything at all, I just want to let you know you are all still connected. Vibration coming from your higher self to you. Feel your connection with your higher self. And it's time to ask your higher self to give you the message for the universal truth you need to know. Say, I'm ready for the message for the universal truth. I am ready for my message. Stay in this energy and wait for the message from your higher self. Keep focusing on the breath, the pulsation in your heart. कुछ भी मैसेज आपका हायर सेल्फ आपको दे सकता है. It's different for everybody because at the energy level we are all same. Still God made us different. याद रखिए, भगवान ने सब बहुत यूनिक बनाया है. कोई भी हमसे मिलता जुलता हो सकता है लेकिन हमारे जैसा नहीं हो सकता. तो भगवान ने आपको अकेला ही बनाया. We are all the special creation of this universe. बहुत ही प्यार से भगवान ने आपको बनाया है डिफरेंट. आपके बच्चे या आपके भाई बहन आपके जैसे दिख सकते हैं लेकिन आप जैसे नहीं, आप नहीं हो सकते. Now it's time to say thank you to your higher self. Say thank you, my higher self, for guiding me, for the love,
and the message you got. बहुत ही प्यार से अपने हायर सेल्फ को थैंक यू कीजिए. Thank you your higher self wholeheartedly. And now see your higher self leaving. What is the feeling of connection with your higher self? That connection with your higher self completely feel in your body. जो अभी आपने कन्वर्सेशन अपने हायर सेल्फ से किया है, it happened, it just happened. You spoke to your higher self. Feel the connectivity, feel the love in your body. Now, I want you to come back to your physical body. See the surrounding in the room around you. अपने आसपास का स्पेस भी नोटिस कीजिए, स्पेस को भी महसूस कीजिए. And keep your eyes still closed. स्पेस को महसूस कीजिए, अपनी आईज क्लोज करके स्टडी करते हुए. ऑब्जर्व द सराउंडिंग के आसपास कमरे में क्या है, हर चीज को एक्नॉलेज कीजिए. And now take a deep breath to come back to your body. Tickle your toes, move your fingers. Now let us thank all the masters. महावतार बाबा जी, ब्रह्म ऋषि पितामह अत्रि जी. अगर आपने अपने गुरुज को कॉल किया था, इनवाइट किया था, so say thank you to your gurus or your इष्ट देवता. And also say thank you to Lord Shiva. उनकी कॉन्शियसनेस की वजह से we were able to find our higher self. Thank you all the masters जो आज प्रेजेंट थे इस मेडिटेशन में. Also say thank you to all the ascent masters जिन्होंने आज हेल्प की है यहाँ पे इस मेडिटेशन में विजिबली और इनविजिबली. Thank you each and everyone in this group. Thank you to Mother Earth. And thank you to Mother Nature. सभी प्लांट किंगडम को, आकाश को, वायु को, एयर को, वाटर को, सभी एलिमेंट्स को थैंक यू कीजिए. And whenever you're ready, just bring your palms on the top of your eye. With a count of 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And with a big smile, you can open your eyes. Thank you, Masters. Does anybody have any question or anything to share? Okay, if you want to continue in this state, you are most welcome to go ahead and stay in this state. And once you come out of this meditation, try to come out slowly. Because sometimes what happens when you come out quickly, you will have in your heart, you will feel heaviness.
So important that you should be grounded. और आप जब जमीन पे बैठ जाते हैं या जमीन को टच कर लेते हैं तो आप ग्राउंड हो जाते हैं. So thank you so much for staying with me, and thank you so much. I'll see you tomorrow at 5:15. Do not forget, practice tonight before you go to the bed. Thank you, masters. Thank you so much. Thank you for your beautiful energy.